Is it visible, sir? Yes, yes. Should I explain, sir? Yes. So, sir, first of all, I have taken the header file here, and I have taken the size of the queue 100, and then I have taken a array, sir, here CQ size, and then initialized the value of rear and front -1. Okay. Then this is my user defined insert function, sir, where I have taken the one item which I will insert, and then, sir, I have checked the condition for underflow, sir, here. Sorry, overflow here, because insertion overflow condition may occur. So I have checked that if front is equals to 0 and here is equals to size -1, and here, sir, front is equals to rear +1. So then I have generated the two messages that queue is full and insertion cannot be done. Yes. Second case is And for. then, yes, sir, if front is equals to -1, that is if the queue is initially empty and the item which I am going to insert is the first one. So then I have to initialize front and rear is equals to 0, which I have here done, so that the insertion should take place at 0 index position. Otherwise, if the if the queue contains any element, then I will just initialize, increment the value of rear, which I have done here, and then let me go down. And then I have taken the input at rear index position and inserted the item there. Okay, sir. Okay, it is okay. Then I have made the deletion user defined function here. So void del, and here I have to check the condition that if I will delete, if I'm deleting an element, the list should contain an element. So here underflow condition may occur. So if front is equals to -1 and front is greater than rear, so then the queue will be empty and deletion cannot be done. Otherwise, I have deleted the element here, CQ front. Front position at the element is stored at front index position. I have just popped that element, and look here, after popping the element, what we have to do, we have to just increment the front value. So there are conditions, two conditions which I have mentioned here. We can see that here. If front is equals to rear, this is the condition where after pop, this is the condition occur when the queue contains only one element, then only front will be equal to rear. And if after popping that element, the list will be empty. That's why I have assigned -1 to both front and rear. Otherwise, I have one more condition here, that if front is equals to size -1, so it means that front is at here front is equals to size -1. There is one more condition, and in this case I have assigned 0 to front position. This is the case. It means that this is the case in which the front exists on the last position of the list. Yes, sir. Last index position of the array. Yes. So then I have to initialize assigned. Then I have assigned 0 here. Otherwise, I will just increment the value of front here, which you can see here. And then I have my traversal function. So I have taken here one integer for accessing the index position of the array. And I have to just check here for the underflow condition, because in that particular scenario, we can't just traverse the list. So if front is equals to -1, then queue is empty and traversing cannot be done. Otherwise, I will just pop the front value here, I index position. Okay, but in this case, you are not checking the whether your front rear position exists on the max -1 position or not, because in display section also you have to check out that position, whether your rear is exist on the max -1, because after that you have to allocate rear by 0 to revisit the next element. So here you are not checking that particular case, which is earlier checked by you in case of deletion as well as in insertion. In display also you have to check the same, because here front and rear, if the front is on the 0 position and rear is in between the 0 and max -1, then it will work efficiently. In otherwise case, this traversal operation is not up to mark. We just check out this, because here some exception is there. In case of traversal, some exception is there. You are not checking the. So here I have to include that condition that if front is greater than rear, sir, I guess.
Yes. Front less than Sir, equals to, if I include that particular condition in this, sir, in OR case, with OR case here, sir, front is equals to -1, then I think it will work. Right now it's also working, sir, but But it will work, but some exceptions are there. For a specific condition, the traversal operation is not up to mark. तो अगर वो condition arise होगा तब आपका ये traversal नहीं होगा. But let me check first. Just execute this program because main is remain same. Main में तो कोई ज़्यादा changing नहीं होगा. yes. So here press 1. So it's the traversal operation, sir. I have inserted 4 elements here, 11, 12, 13 and 14, and just traverse the whole value that is giving here 11, 12, 13, 14. And then I will just pop it one by one. So deleted element 11, then deleted 11, 12, and then if I check the list, then it is 13, 14. Then again I will delete, and again I will delete, and then if I will again delete, then it will generate the message that queue is empty. Queue is empty, deletion cannot be done. Okay. And then just call the traversal operation. Yes, sir. Here I think it should flash that message, sir. That Let me add that one. That is why there is a need to include that sort of condition also in traversal operation. Here we are just checking it in a general queue manner because yes. Yes, sir. Now it's flashing. Traversing cannot be done. Okay. Okay, just exit. Yes. Okay, so I think the rest of the students also got the particular concept. What is the circular queue actually is, and excuse me, sir. हाँ बोलिए. So I have a question to ask related to the circular queue, sir. हाँ पूछिए. So why we are introducing a circular queue? Because we have already a simple queue. So have there is some drawback related to the simple queue, sir? Yes. Can I answer? Of course, there is a drawback of general queue. Earlier in the previous lecture, we already discussed the drawback of general queue. After performing deletion operation from the front position, at the same time, whenever you are inserting certain data, so after inserting the data, you just approach the rear position. That means once you approach the rear, यानी कि आप अगर एंड ऑफ लिस्ट के को अप्रोच कर रहे हैं तो एंड ऑफ द लिस्ट में आपका जो अगर रियर पोजीशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बाद अगर आपके लिस्ट में पहले भी अगर एलोकेशन खाली होगा तो देयर इज नो प्रोविजन इन जनरल क्यू टू एलोकेट दैट पर्टिकुलर वैकेंट पोजीशन. ठीक है ना. For that reason, we just need a particular circular queue through which we can allocate that free allocation and free आपका जो पोजीशन है उसको भी हम लोग एलोकेट कर पाएंगे. ठीक है ना. तो जो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस भी किए थे, व्हाट इज द नीड ऑफ सर्कुलर क्यू. सपोज यहाँ पर अगर हम जनरल क्यू की बात करें तो जनरल क्यू में हमारा क्या था. जनरल क्यू में जब भी हम कोई ऑपरेशन करते थे तो ये जनरल क्यू है आपका. तो जनरल क्यू में सपोज करिए कि आपने इंसर्शन किया. आप इंसर्शन करते करते सपोज करो 5 है, 2, 3, 10, 11, 12, 17, 18. ये आपका रियर पोजीशन है और ये आपका फ्रंट पोजीशन है. ठीक है ना. अब जनरल क्यू में क्या हो रहा था कि हम जब डिलीट कर रहे थे फ्रंट बढ़ा रहे थे तो हो सकता है कि नंबर ऑफ टाइम हम डिलीशन फंक्शन को कॉल करें. ठीक है ना. सपोज करो कि हम नंबर ऑफ टाइम डिलीट फंक्शन को कॉल करें तो 3 बार डिलीट फंक्शन को कॉल किए तो ये हमारा
अब आपका न्यू लिस्ट क्या हो जाएगा? इस 3 कॉल के बाद न्यू लिस्ट का आपका एग्जिस्टेंस क्या होगा? आउट ऑफ 3, 3, 6 यानी 8 लोकेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोकेशन में ये 3 लोकेशन फ्री हो गया, क्योंकि 3 बार डेल फंक्शन कॉल हुआ। तो अब आपका न्यू फ्रंट कहाँ है? यानी कि न्यू फ्रंट आपका जो है वो एलोकेट करा। सपोज ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है लिस्ट में, तो अभी आपका न्यू फ्रंट क्या हो जाएगा? क्योंकि डिलीशन के बाद आप जो है फ्रंट को बढ़ा देते हैं, तो न्यू फ्रंट आपका क्या हो जाएगा? 3 बार डेल फंक्शन कॉल करने के बाद फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, ये 3 बार कॉल हुआ, तो आपका जो है फ्रंट अभी कहाँ चला गया? फ्रंट इक्वल टू 3 हो गया। और रियर आपका जो है आपने इंसर्शन वर्क यहाँ पे स्टॉप किया हुआ, तो रियर आपका 7 है। तो इस केस में, जनरल क्यू के केस में, आपका जो एलिमेंट है 10, 11, 12, 17 और 18, यहाँ पर जगह खाली होने के बाद भी you have no option to allocate any new element on this particular 3 location. You are calling 3 times del function, but and you have a free allocation also, but there is no provision to allocate a new element over there. So that's why we need a different type of queue in which we can allocate a new element on this per vacant position also, and by the help of circular queue it is completed. I think that the concept is clear to you. क्योंकि आप जैसे ही सर्कुलर क्यू में जाएंगे, तो सर्कुलर क्यू में जैसे ही रियर आपका मैक्स माइनस 1 पोजीशन पर होगा, तो यू जस्ट एलोकेट रियर इक्वल टू 0. वंस द रियर इक्वल टू 0, देन यू कैन इजीली एलोकेट न्यू एलिमेंट ओवर देयर. So we are checking condition for rear equal to max minus 1 in case of circular queue. So whenever the rear is on max minus 1 position, then we allocate, we can assign the rear position by 0, and on the 0th position the new element is allocated in the circular queue, which is not in the case of general queue. General queue में ये काम नहीं हम कर पा रहे थे. I think that the demerit is clear to you. Yes sir, yes sir. So this is the main demerit Sir, of yes sir, but we can allocate element at rear barabar 0 only when front will not be equal to 0. The front index position will not point to 0. Then only we will be able to allocate the new element at 0 index position. So that is the limitation of circular queue. Okay. Yes. That is the limitation of circular queue. That's why we move to the double-ended queue. Okay, na? DQ. That means we can perform insertion and deletion on both ends. So basically, the insertion and deletion is fixed in case of circular queue as well as in case of general queue. तो इंसर्शन डिलीशन आपका एक एंड फिक्स है, यानी फ्रंट एंड से डिलीशन होगा और रियर एंड से इंसर्शन होगा. बट whenever we have a concept of DQ, that is double-ended queue. Today we'll discuss the double-ended queue. So double-ended queue, that means what? The insertion, there is a barrier. There is a barrier for insertion. हाँ. Sir, will we not discuss the linked list implementation of circular queue? Yes, you can implement by yourself. Otherwise, if you're not capable to implement it using linked list, first I will try, sir. You just first try. Yes, sir. You just try Yes, first, sir. and then after, if there is some certain problem, then I just discuss that one. Because first of all, I discuss it in using array. I will discuss that Yes, using linked list also. Okay, na? But, Okay. but first you will try by yourself. Then after. Yes, sir, yes. तो ये demerit आपका जो है, that is the demerit of general queue, which is overcome in case of circular queue. But in circular queue also there is some drawback or shortcomings. So we just switch to the next types of queue, that is. Sir, in the traversal operation, we have I have included front is greater than rear, and then I have flashed 2 messages there. So if that condition occurs, then I have to take that printing part of accessing all the elements in else condition. Yes, you have to check 2 cases. In case of display, you have to check first whether your front is on the front is less than or equal to rear position or not. If the front is less than or equal to rear position, you just do the job as per the general queue. Yes, And second case, you have to check whether the rear position is less than or equal to max minus 1. If it is on max minus 1, then you have to check out the particular list from rear equal to 0. ठीक है ना? तो you have to check 2 conditions in that particular case. 2 condition वहां पर check करना पड़ेगा. एक condition आपको check करना पड़ेगा कि front आपका -1 है, अगर है तो empty होगा, क्योंकि डिस्प्ले में भी आपको empty पहले check करना होगा.
एम्प्टी नहीं है तो आपको पहले चेक करना होगा कि फ्रंट जो आपका है वो लेस देन इक्वल टू रियर है कि नहीं। अगर फ्रंट लेस देन इक्वल टू रियर है तो जब तक आपका फ्रंट लेस देन इक्वल टू रियर है तब तक आप फ्रंट को रिट्रीव करेंगे और फ्रंट हाँ बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा अदरवाइज केस में यू हैव टू चेक कि अगर फ्रंट आपका लेस देन और इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है तो उस केस में फिर आप फ्रंट को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और फाइनली आप फ्रंट को 0 असाइन करेंगे, मैक्स माइनस 1 होने के बाद फ्रंट को 0 असाइन करेंगे और फिर फ्रंट को आप वहां से लेस देन इक्वल टू रियर पोजीशन से आगे बढ़ाएंगे। तो ये कंडीशन आपको डिस्प्ले में लेना होगा। आई जस्ट शेयर द आई जस्ट शेयर द कंप्लीट प्रोग्राम इन द ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप में हम डाल देंगे तो you can easily analyze ki what is the particular. The one which I made was right, or is there some any modification required? Yes. Sir, the one which I have shared right now, the program yes, of yes. the circular queue, sir. So was it right, sir? Or? Yes, it was right. There is no problem, but there is some exception in part of traversal operation. Rest one, yes, sir. Rest one, there is no problem. Rest part of the program yes, is okay, there is no problem. Your traversal operation is also okay, but some of the exceptions occur whenever some specific types of array we have, yeah, some specific types of list we have. तो जब आपका स्पेसिफिक कोई कंडीशन आएगा तो उस केस में वहां पर आपका ट्रेवर्सल आपका हो सकता है एक्सेप्शंस सफर्ड फ्रॉम एक्सेप्शंस, अदरवाइज योर ट्रेवर्सल ऑपरेशन इज आल्सो ओके, ठीक है ना। तो वी हैव टू टेक प्रॉपर कंसीडरेशन एज पर द सर्कुलर क्यू वी हैव। सर्कुलर क्यू के बेसिस पर हमको थोड़ा सा वहां कंसीडरेशन लेना पड़ेगा। अब ये बेसिकली जो डबल एंडेड क्यू है सेकंड, हाँ प्रिंस कुमार बोलिए। हाँ बोलिए प्रिंस कुमार, एनी डाउट्स? नो सर। यू आर रेजिंग हैंड, दैट्स व्हाई। सर वो गलती से क्लिक हो गया। ओके ओके। विकास कुमार, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। तो समझ में नहीं आ रहा, एक क्लास छूट गया था, ये क्यों? अच्छा, तो उसके लिए थोड़ा सा वो YouTube पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक क्लास ही छूटा हुआ है ज्यादा। ठीक है, तो एक क्लास में सर्कुलर क्यू केवल एक नया क्यू डिस्कस किए हैं। तो ये जो कंटेंट हम शेयर किए थे आपके ग्रुप में उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद नहीं होगा तो हम डिस्कस कर देंगे, एक रिवीजन क्लास डाल देंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्यू एक क्लास हम रिवीजन कर देंगे। यस सर। हाँ, तो डबल एंडेड क्यू में क्या है कि बेसिकली जो हमारा क्यू है ये हमको पता है कि क्यू में सपोज दिस इज एनी क्यू, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ एनी क्यू। तो क्यू में आपका जो है इंसर्शन कहाँ से होता है, यू ऑलरेडी नो कि अगर ये हमारा फ्रंट है, रियर पोजीशन। हाँ ठीक है, तो ये फ्रंट और रियर एक्चुअली जो है वो फ्रंट से इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, और रियर से इंसर्शन होता है। ये जनरल या सर्कुलर क्यू कहीं पर भी हमारा जो मेन थीम है यही है। डबल एंडेड क्यू कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम दो तरह का रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। एक रिस्ट्रिक्शन डिलीशन के लिए हो सकता है, एक रिस्ट्रिक्शन इंसर्शन के लिए हो सकता है। अब रिस्ट्रिक्शन बेसिकली क्या है, रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि जब हम डिलीशन के लिए रिस्ट्रिक्शन डालेंगे तो हमारा डिलीशन जहां जिस एंड से हो रहा है उसी एंड से होगा, इंसर्शन दोनों एंड से हो सकता है, यानी इंसर्शन फ्रंट से भी होगा और रियर से भी होगा। तो whenever we restrict particular operation, यानी कि whenever we restrict deletion, then insertion should take place from both end. Whenever we restrict insertion, then deletion should take place from both end. That is the front end as well as rear end. अब यहाँ पर क्या है कि हमारा फ्रंट और रियर फ्रीक्वेंटली चेंज होगा, तो हम एंटायर लिस्ट को हॉरिजॉन्टल एज्यूम करेंगे कि यानी कि अरेंजमेंट ऑफ क्यू जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। तो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगा तो इसमें हमारा एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा, क्योंकि फ्रंट और रियर यहाँ फ्रीक्वेंटली चेंज होगा इंसर्शन डिलीशन में। तो लेफ्ट और राइट हम लोग एज्यूम करेंगे, क्योंकि लेफ्ट अगर है और राइट है तो लेफ्ट राइट डिलीशन के लिए भी यूज होगा और इंसर्शन के लिए भी यूज होगा। यानी कि जब हम इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो डिलीशन के लिए लेफ्ट राइट दोनों एंड से हम डिलीशन कर सकते हैं,
और जब हम डिलीशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो इंसर्शन हम दोनों एंड से कर सकते हैं, यानी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। वी जस्ट एज्यूम द क्यू इन ए हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मेरा लेफ्ट और राइट जो है वो एजम्पशन हमारा होगा फ्रंट और रियर के लिए, बिकॉज फ्रंट और रियर जो है फ्रीक्वेंटली यहाँ चेंज होगा। डबल एंडेड क्यू इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर दोनों एंड का इस्तेमाल इंसर्शन और डिलीशन दोनों पर्पस के लिए होगा, लेकिन जब इंसर्शन दोनों एंड से होगा तो डिलीशन किसी एक एंड से होगा। किसी एक एंड से कहां से होगा? जहां से उसको नोटिफाई किया गया है। डिलीशन के लिए फ्रंट एंड रिस्पॉन्सिबल है तो फ्रंट से ही डिलीशन होगा। रियर इंसर्शन और जो इंसर्शन जो है वो रियर और फ्रंट दोनों साइड से होगा, यानी दोनों एंड से होगा। लेकिन जब इंसर्शन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो डिलीशन हमारा दोनों एंड से होगा। तो इंसर्शन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि इंसर्शन शुड टेक प्लेस फ्रॉम रियर एंड ओनली, there is no provision to perform insertion from both end. तो in double ended queue we have two types of restrictions, ठीक है ना। तो double ended queue को सबसे पहले तो ये है why it is double ended queue, because both end is responsible for deletion as well as insertion operation, but we are not doing insertion and deletion both at the same time. एक समय में deletion और insertion दोनों end से नहीं करेंगे। अगर insertion दोनों end से करेंगे तो deletion एक specific end से होगा, that is the front end। अगर डिलीशन दोनों एंड से करेंगे तो इंसर्शन एक स्पेसिफिक एंड से होगा, दैट इज द रियर एंड, बिकॉज रियर एंड इज डेजिग्नेट फॉर इंसर्शन जॉब, फ्रंट एंड इज डेजिग्नेट फॉर डिलीशन जॉब। तो जो पर्टिकुलर आपका एंड पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए डेजिग्नेटेड है उसको हम उसी एंड को यूज करेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जनरल क्यू एंड द डबल एंडेड क्यू। इन डबल एंडेड क्यू वी कैन परफॉर्म इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम बोथ एंड, but there is restrictions at a time either for insertion or deletion. So whenever there is a restriction for insertion, so insertion should take place from the rear end, and whenever there is a restriction from deletion for deletion, then deletion should take place from the front end only, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर डबल एंडेड क्यू हम लोग जो डिस्कस करेंगे that is of two types. There are, Sir, here in the double ended queue, sir, it is written ended. So what does ended signify here, sir? ended, yes, You have ended is for two end, that is the left end and the right end. That is why I am asking, I am suggesting that in place of front and rear we are taking left and right part of the particular queue, because we just assume that queue is placed in a horizontal manner, and we have a left part and the right part because front and rear is frequently changed in this particular case. Because अगर हम यहाँ पर बात कर, let me complete first, then it will be very much clear to you. So there are two types of DQ, ठीक है ना, double ended queue. That is first one is the IRD and second one is the ORD. We just discussed. The IRD is what? Input restricted DQ. Input restricted DQ. DQ जब लिखेंगे तो ये input restricted DQ and output restricted DQ. Now तो फर्स्ट वी डिस्कस IRD, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ का मतलब क्या है कि देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन फॉर इनपुट, दैट मींस इंसर्शन। तो whenever there is a restriction for insertion, so in IRD mode we just write in input restricted DQ, you know, deletion should take place from both end, but insertion should take place यानी कि इंसर्शन आपका बेसिकली कहां से होता है?
फ्रंट से या rear rear end से? से sir. Rear. तो हाँ, तो in IRD deletion should take place because there is a restriction for input. तो input के लिए restriction है, तो in IRD deletion should take place from both end, but insertion should take place from the rear end only. ठीक है ना? That means in this particular case in IRD mode of DQ, आपका सपोज करिए ये आपका Q है, तो इस Q में आपका डिलीशन इंसर्शन जो है हमेशा रियर एंड से इंसर्शन होगा, बट डिलीशन जो है ये दोनों एंड से होगा। यानी कि Q में इंसर्शन अगर ये इसको आप फ्रंट मान लें और इसको रियर एंड मान लें, तो फ्रंट एंड और रियर एंड, ठीक है ना, तो डिलीशन जो है वो रियर से भी होगा, फ्रंट से भी होगा। तो डिलीशन शुड अकर ऑन द फ्रंट एज वेल एज रियर पोजीशन। तो दैट्स व्हाई वी जस्ट टेक द पर्टिकुलर लेफ्ट साइड ऑफ द पर्टिकुलर, यानी फ्रंट को भी एज्यूम लेफ्ट एंड रियर भी एज्यूम राइट। तो इंसर्शन डिलीशन शुड टेक प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड एज वेल एज राइट साइड ऑफ द पर्टिकुलर क्यू, बट इंसर्शन शुड टेक प्लेस फ्रॉम द राइट एंड एंड द राइट इज द एलोकेशन फॉर द रियर। राइट जो है वो रियर को एलोकेट कर रहा है। चूंकि इंसर्शन हमेशा रियर एंड से होता है, तो जिस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन होगा वो जिस पर्टिकुलर एंड से डेजिग्नेटेड है उसी एंड से आप वो परफॉर्म करेंगे। तो इन IRD डिलीशन आपका जो है दोनों एंड से होगा, फ्रंट और रियर, लेकिन इंसर्शन हमेशा रियर एंड से ही होगा। सेकेंड जो केस है दैट इज ORD, यानी कि देयर इज ए रिस्ट्रिक्शंस फॉर इन ORD देयर इज ए रिस्ट्रिक्शंस फॉर आउटपुट, यानी कि डिलीशन के लिए रिस्ट्रिक्शन है। तो इन ORD नाउ अगेन जस्ट opposite of this one, insertion should take place on both end. Insertion should take place on both end, but deletion occur from the, अब डिलीशन कहां से होता है जनरली, तो डिलीशन हमारा जो है वो फ्रंट एंड से होता है। तो डिलीशन अकर फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो अगर ORD यानी कि आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ होगा, तो उस केस में आपका जो Q है कोई भी इस Q में इंसर्शन दोनों एंड से होगा, यानी इंसर्शन शुड टेक प्लेस ऑन बोथ एंड, but deletion should occur from the front end. Yani in this is the ORD case and this one is the IRD case. तो input restricted DQ में अब ये यहाँ पर आपको by name it is clear that input there is a restriction for input means insertion. तो insertion जिसके लिए restriction है वो जिस एंड से आपका होता है, यानी कि अगर रियर एंड से होता है तो रियर एंड से ही होगा। डिलीशन दोनों एंड से कर सकते हैं, क्योंकि डबल एंडेड क्यू है तो दोनों एंड हम यूज करेंगे इंसर्शन और डिलीशन दोनों के लिए। तो आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ, तो आउटपुट देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन फॉर आउटपुट, दैट मींस फॉर डिलीशन देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन बट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इंसर्शन। तो इन केस ऑफ ORD we can perform insertion from both end, but deletion should occur from the front end only. तो अब इसके लिए क्या है कि यहाँ पर फ्रंट और रियर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। तो whenever we are writing program we just place front and rear as a left and right respectively. So we just use left and right variable in case of array and pointer, left and right pointer in case of pointer, यानी कि linked list. So whenever we are going to implement DQ using linked list, we just use left pointer and right pointer. We directly do not use a front and rear pointer, ठीक है ना। तो फ्रंट और रियर के लिए एक एडिशनल वेरिएबल हम लोग लेफ्ट और राइट पॉइंटर ले लेंगे। एरे के केस में वी जस्ट टेक लेफ्ट एंड राइट एज एन इंडेक्स फॉर एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ डेटा इनसाइड द पर्टिकुलर क्यू। तो अब यहाँ पर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड में अब बताइए इंसर्शन के लिए हमारे पास कितना ऑपरेशन होगा इसमें, हाउ मेनी ऑपरेशन वी हैव टू डिस्कस फॉर इंसर्शन एंड हाउ मेनी
function we have to discuss for deletion. Total all around we have to discuss. Sir. Yes. Sir, 2 for insertion and 2 for deletion. Yes, because we have to perform insertion. Yani all around we have to perform four function, 4 algorithm. Yani 2 for deletion and 2 for insertion. Now out of these 4, in particular form IRD or ORD, 3 function is attempted. ठीक है ना. आप IRD में देख रहे होंगे कि इंसर्शन आपका एक ही एंड से हो रहा है. तो इंसर्शन we just write the particular procedure to perform insertion from right, insertion from left, deletion from right, deletion from left. यानी कि we have to discuss 4 function for insertion and deletion on the basis of left and right of the particular queue. तो left और right को हम front और rear को left और right treat करेंगे. All around we have to discuss 4 function for insertion and deletion. Now whenever we approaching IRD जब approach करेंगे तो we just use 3 function, 2 function of deletion, that is deletion from left and deletion from right, and 1 function from insertion, that is insertion from right. Whenever we are implementing ORD, तो ORD के केस में we have to use insertion left and right and deletion from left only. That means Sir, हाँ. In IRD, sir, you said that deletion can occur from both ends. So the deletion will occur simultaneously from both ends in simultaneous manner, sir, or one by one manner? No. So in DQ, we have to maintain the queue in 2 different manner. You have to handle the queue in 2 different manner, either in IRD or in ORD mode. So if you are using IRD, then you have to call that 3 function, 2 function for deletion and 1 function for insertion. So it is totally depends on the user whether user want to perform deletion from left side or right side. So you just give privilege to the user whether the user want to perform deletion from left side or right side. Once the user select the particular option, then the deletion should occur either from left side or right side on the basis of the request submitted by the user. तो रिक्वेस्ट जैसा रिक्वेस्ट करेगा IRD में यूजर को आप प्रिविलेज देंगे कि वो डिलीशन दोनों एंड से कर सकता है, लेफ्ट और राइट, और इंसर्शन राइट से करेगा. उसी तरह से ORD के केस में आप ये यूजर को प्रिविलेज देंगे कि इंसर्शन आप लेफ्ट और राइट से बताइए किससे करना है. तो यूजर आपका सेलेक्ट करेगा कि इंसर्शन लेफ्ट से करना है, यूजर आपका सेलेक्ट करेगा इंसर्शन राइट से करना है. ये काम फ्रीक्वेंट यानी कॉन्करेंटली होगा, यानी कि एक के बाद एक बार लेफ्ट करना चाहेगा फिर बोलेगा राइट से करना है. तो ये यूजर चॉइस होगा, यूजर जैसा चाहेगा. और हर बार आपको जो है ट्रावर्सल ऑपरेशन में स्टेटस ऑफ द लिस्ट भी देखते रहना होगा क्यू का, कि आफ्टर परफॉर्मिंग इंसर्शन और डिलीशन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द लिस्ट, एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट ट्रावर्सल ऑपरेशन वी कैन व्यू द डिटेल्स ऑफ द लिस्ट एनी टाइम व्हेनेवर वी वांट. तो अब यहाँ पर समझना ये है कि व्हेनेवर यू आर इन द प्रोसेस टू मेंटेन अ DQ, you have to maintain first of all, यानी कि आपको यूजर से पहले सेलेक्ट करवाना होगा कि whether user want to perform operation in IRD mode और ORD mode. तो इसके लिए आप स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. तो by the help of that switch statement, one of the option is selected. Once the option is selected, then you are already have 4 function for insertion and deletion. दोनों के लिए 4 फंक्शन आपका है, एक इंसर्शन लेफ्ट और इंसर्शन राइट 2 हो गया, डिलीशन लेफ्ट और डिलीशन राइट ये हो गया, यानी टोटल 4 फंक्शन है. अब जब IRD यूजर सेलेक्ट करेगा तो इन IRD मेनू यू हैव टू थिंक अबाउट द 3 फंक्शन, यानी यू हैव टू कॉल इंसर्शन फ्रॉम राइट, डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट. अगेन यू गिव प्रिविलेज टू द यूजर कि वेदर यूजर वांट टू परफॉर्म डिलीशन, तो वेदर द यूजर वांट टू परफॉर्म डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट और राइट. व्हेनेवर यूजर वांट टू परफॉर्म डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट, you just call the left deletion operation, and whenever user want to perform deletion from right, you just call the deletion from right. और यूजर जब इंसर्ट करना चाहेगा तो इंसर्शन करने के लिए यहाँ प्रिविलेज हमेशा उसको यही मिलेगा कि इंसर्शन राइट से ही होगा. IRD के केस में सेम थिंग यू आर डूइंग, यू आर जस्ट इंक्लूडिंग इन केस ऑफ ORD ऑल्सो. ORD में भी आपको वही 3 फंक्शन कॉल करना है. यूजर को ORD के केस में इंसर्शन के लिए आप दोनों एंड यूज करा सकते हैं. तो यूजर अब सबमिट करेगा कि इंसर्शन उसको लेफ्ट से करना है या राइट से करना है, डिलीशन हमेशा उसका लेफ्ट से ही होगा. तो ये 6 फंक्शन आपका यूज होगा. 4 में से ये 4 जो आपका है वो 4 जो है वो 3-3 फॉर्म में चेक होगा, यानी IRD के केस में 3 फंक्शन कॉल होगा,
और ORD के केस में 3 फंक्शन कॉल होगा। हाँ, will be designed switch. You said that we should use switch statement, so we will use switch statement separately for IRD and ORD. yes, first of all, first of all you have to take one switch statement from where the user switch either in IRD or ORD once. Okay. Yes. Or once the IRD or ORD is selected, then after you have to again take one switch statement for IRD as well as ORD. यानी कि you have to use meta switch operation here. आपको meta switch लेना पड़ेगा, क्योंकि IRD में अगेन यू हैव टू परफॉर्म सिलेक्शन जॉब, यानी IRD में भी 3 फंक्शन आपका होगा। ट्रैवर्सल भी आप कॉल करेंगे क्योंकि IRD में भी आपको डिस्प्ले कराना होगा, ठीक है ना। तो IRD के जस्ट लाइक नेस्टेड स्विच सर। हाँ, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट लेना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि यूजर जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो यूजर जो है वो पहले ही तय कर लेगा कि उसको इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ यूज करना है या आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ यूज करना है। जैसे ही इनपुट रिस्ट्रिक्टेड DQ करेगा तो आपको स्विच करा देना होगा, IRD मोड के लिए स्विच कराना होगा, जिसमें IRD में आप कौन कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, इंसर्शन केवल राइट से, डिलीशन लेफ्ट और राइट दोनों से। अगेन वहां भी आपको एक मेनू डिजाइन करके देना पड़ेगा यूजर को, जहां पर यूजर ये सेलेक्ट करेगा कि इंसर्शन उसको डिलीशन कहां से करना है, इंसर्शन कहां से करना है, ठीक है ना। तो वहां पर भी आपको इंसर्शन फ्रॉम राइट, इंसर्शन फ्रॉम राइट, डिलीशन फ्रॉम लेफ्ट, डिलीशन फ्रॉम राइट, ये ऑप्शन देना होगा यूजर को। यूजर उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करके परफॉर्म करेगा ऑपरेशन। यानी कि आपको अगेन IRD ORD के बाद भी एक स्विच IRD के लिए और एक स्विच ORD के लिए लेना पड़ेगा। क्लियर है ना सर? Sir, if in exam sir question comes that give array implementation of queue, so we should write the program for the separate insertion, deletion and traversal, or yes, sir we have to give some theory there also? No, if program asked then only program, no theory is needed. But no sir, the question arises that give the array implementation of queue, so what will be the answer? Array implementation of queue, you just give the concept of regarding array, यानी कि what is the concept of array, but you have to mention the queue only, क्योंकि you have to maintain the protocol of queue. Whenever you are going to implement queue as an array, तो you have to maintain the protocol of queue. queue का protocol आपको maintain करना है FIFO, तो आपको focus करना है queue को कि वहां पर आपका additional क्या indexing यूज होगा या variable यूज होगा, इसको